So, as we have covered the most important topic, one of the most important topic, that was posterior triangle of the neck. So now today we are going to cover the first part of anterior triangle of neck. We have already seen that the neck is divided into two parts with the help of sternocleidomastoid muscle, and the anterior part, that is called as anterior triangle of neck, and the posterior part, that is called as posterior triangle of neck. So we have covered posterior triangle of neck, and today we are going to start with anterior triangle of neck. So anterior triangle of neck start करने से पहले हम कुछ important salient points पढ़ेंगे anterior region के बारे में. So what are the boundaries of anterior region? What are the boundaries of anterior region? So as we can see that anterior region, the boundaries are divided into anterior, posterior, base. Okay. So first is anterior. So this is anterior median line of neck extending from symphysis menti to suprasternal notch. It is starting from symphysis menti. I would like to show you in this diagram this line where both the sided mandible is joining. This is called as symphysis menti. This is called as symphysis menti. And here we have manubriosternal. This is manubrium. This is manubrium, and below we have body of sternum. So this bone, this is called as sternum. Above this sternum there is suprasternal notch. यहाँ पे क्या present रहती है? Suprasternal notch. This is manubrium. This is manubrium. Here we have clavicle. Here we have clavicle, and above this space is called as suprasternal notch. This space is called as suprasternal notch. So midline anteriorly it is symphysis menti. This is symphysis menti, and here we have suprasternal notch. Okay. So this line, this line is anterior. This is anteriorly. Okay. This is anteriorly. This is anterior border. So this was about anterior border. Posteriorly कौन सी मसल रहेगी? Sternocleidomastoid muscle. Sternocleidomastoid muscle. तो ये जो border दिख रही है आपको, this is the anterior border of sternocleidomastoid muscle. दोनों anterior region में दोनों side sternocleidomastoid muscle. So this is sternocleidomastoid muscle. So both side we can see anterior border of sternocleidomastoid muscle. और एंटीरियर बॉर्डर हमने कहाँ पे देखी? सिम्फाइसिस मेंटी से सुप्रास्टर्नल नॉच तक, सुप्रास्टर्नल नॉच तक. ओके. और पोस्टीरियरली हमने क्या देखा? एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल. अब दिस इज द बेस ऑफ मैंडिबल, एंगल ऑफ मैंडिबल एंड बेस ऑफ मैंडिबल. सो दिस इज फॉर्मिंग द base. This is forming the base of this region. Okay, so it is like this. The region is like this. So these are anterior border of sternocleidomastoid muscle. Okay, and this is the base and angle of, this is the base and angle of mandible. This is the base and angle of mandible, and this is the anterior border of sternocleidomastoid muscle. Anteriorly we have seen from symphysis menti to this suprasternal notch. So these are the borders of this triangular area which is called as anterior region, which is called as anterior region. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? anterior region. anterior border हमने देख ली, posterior border हमने देख ली, base हमने देख लिया, which is lined by lower border of mandible. और लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल के साथ साथ क्या इन्वॉल्व रहता है? एंगल ऑफ मैंडिबल. और ऑफ एंगल ऑफ मैंडिबल के ऊपर क्या आता है? मैस्टॉइड प्रोसेस. क्या आता है? मैस्टॉइड प्रोसेस. तो हमने एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, बेस, ये तीन चीजें देख ली. अब नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू एपेक्स. एपेक्स इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स. एपेक्स इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स. So this is the apex. This is the apex. This is the base. Okay, this is the base. यहाँ पे क्या रहेगी? Anterior border. ये क्या है? Posterior border. This is anterior border. This is anterior border. So this apex, this is directed downwards. ये कहाँ पे मिल रहा है? This is the meeting point of both the sides of anterior border of sternocleidomastoid muscle
एंड एंटीरियर मीडियन लाइन, दोनों तरफ से क्या आ रही है, दोनों साइड से ये आ रही है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, और फ्रंट से क्या आ रही है, एंटीरियर मीडियन बॉर्डर, फ्रंट से क्या आ रही है, एंटीरियर मीडियन बॉर्डर। ओके, इसके अलावा और क्या रहेगा, रूफ, देयर विल बी अ रूफ। अब रूफ किससे फॉर्म होगी, नेक में सबसे पहले जो आपको दिख रही है, दिस इज स्किन, व्हाट यू कैन सी हियर इज स्किन। स्किन के नीचे हमने क्या पढ़ा है, सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया में हमने बहुत सारे क्यूटेनियस स्ट्रक्चर्स देखे और इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट मसल देखी है, दैट इज प्लेटिस्मा, that is platysma. Below superficial fascia we have deep fascia. उसमें भी कौन सी लेयर है, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया. So this was about the anterior region. This is I am talking about anterior region. तो anterior region की borders एक बार short में, symphysis menti to suprasternal notch. This is the anterior border. This border, this is the posterior border. Posterior border किससे बनती है, anterior border of sternocleidomastoid muscle. Okay. Then this base, this is formed by mandible, angle of mandible. Okay, so this base is formed by these two structures, and this is the apex inverted, or the apex is downwards. Base is above, base is above, apex is downwards. So apex कैसे बना है, ऐसे दोनों, it's like this. Okay, both the sided sternocleidomastoid muscle, they are meeting at that point. और ऊपर से क्या आ रहा है, anterior median line, ऊपर से क्या आ रहा है, anterior median line. अब बहुत important है कि हमें ये anterior median line के structures पता हो. Okay, so we should know the structures which are present in anterior median line. So midline structures in neck. ठीक है, मिडलाइन को हम कितने उसमें डिवाइड करें, 2 to 3 सेंटीमीटर्स, कितना हम एरिया ले रहे हैं, 2 to 3 सेंटीमीटर्स वर्टिकली. कौन सा एरिया रहेगा, वर्टिकल. हम जैसे देख चुके हैं एंटीरियर मीडियन लाइन रहेगी, कहाँ से कहाँ तक रहती है, फ्रॉम सिम्फाइसिस मेंटी टू सुप्रास्टर्नल नॉच. सो दिस इज फ्रॉम सिम्फाइसिस मेंटी टू सुप्रास्टर्नल नॉच. ये रहेगी आपकी द एरिया विच इज प्रेजेंट इन द मिड लाइन. ओके, now first क्या रहेगा, first is skin. Okay, first is skin, second is superficial fascia, second is superficial fascia. Superficial fascia में क्या present रहेगा, platysma. Superficial fascia में क्या present रहेगा, platysma. ठीक है, यहाँ से क्या मसल आनी शुरू हो जाती है, platysma. Okay, and then you can see here, this is anterior jugular vein. This is anterior jugular vein just above suprasternal notch. तो आपको क्या दिख रहा है, just above suprasternal notch you can see here anterior jugular vein. Okay, anterior jugular vein. And then you can see that this is piercing, this vein is piercing investing layer of deep fascia. This vein is piercing investing layer of deep fascia, and this is present 2 to 3 centimeters above the sternum. ये कहाँ पे present रहती है, 2 to 3 centimeters just above the sternum. We have already seen in the diagram. You can once again see that this is the sternum and this is present 2 to 3 centimeters above the this sternum. Then other structures which are piercing superficial fascia is, ये symphysis menti है, यहाँ के just नीचे present रहता है submental lymph node. What do you have, submental lymph node. ठीक है, ये symphysis menti के just नीचे present रहते हैं. अगर ये ऐसे symphysis menti यहाँ पे दो bone मिल रही हैं तो इसके just नीचे ये क्या present रहेगा, there will be submental lymph node. Okay, then the superficial fascia, this is also pierced by transverse cutaneous nerve of neck. This is pierced by transverse cutaneous nerve of neck. इसके नीचे क्या present रहेगा, deep fascia. Deep fascia is having two parts. ठीक है, upper part में वो split होगा और किसको enclose करेगा, submandibular gland. और इसके lower part में वो split होकर कौन सी space बनाता है, substernal space. So this fascia, this is on the upper region, this is covering or